Good evening. This is Ellen physics class. So I think let other people to join. It's like 8:30, sorry 7 p.m. Let me share my screen. Can you see my screen? That's good. So we'll start where we left last time. Last time we started with stable, unstable, and neutral equilibrium, as we can see in this 4.2 figure. So first one is stable equilibrium, and for B it is unstable, so this ball can roll over on either side. So, and the last one is this ball, which is neutral. We do not know where it will go. So, so these are the examples from the real life situation. So if we want to formulate those stuff, so how to formulate stable, unstable, and neutral equilibrium. So stable equilibrium, the ball is more stable and is said to be in stable equilibrium. If it is disturbed slightly from its equilibrium position and a release, it tends to recover its position. So here we can see that if we try to push this ball on either side, so it will come and again it will have some oscillatory motion, and at last it will have stable position with respect to time, right? So that if it is disturbed, so we are disturbing this ball, either we are taking this side or either we are taking this side. So by any way हम इसे अगर डिस्टर्ब करते हैं तो भी वो उसकी जो ओरिजिन पोजीशन है वो फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएगा. It tends to recover. In this case, the potential energy of the system is at its local minimum. So वो यहाँ क्या होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी है इस बॉल की वो हमेशा मिनिमम होती है. फिगर 4.9b, here the ball is said to be unstable equilibrium. तो यहाँ क्या होता है, if it is slightly disturbed from equilibrium position, यहाँ से अगर हम इसे इस साइड पुश कर देंगे राइट हैंड साइड, so it will roll over here, right? So अगर इस बॉल को हम यहाँ पुश कर देंगे तो ये यहाँ से रोल होके इस तरह इस साइड चला जाएगा, and it will never recover its original position, right? Because initially potential energy of the system is local maximum. So जो भी इस बॉल की जो potential energy है वो maximum होती है. If disturbed, it tries to achieve configuration of minimum potential energy. तो यहाँ से वो ये बॉल रोल होके ये मिनिमम पोजीशन जो है वो अचीव करने के लिए ट्राई करेगा. So these are the stable and unstable. Then another is neutral. In figure 4.9c here, if we keep this ball on the flat wall or flat ground, the potential energy of the system is constant over plane. So इस बॉल की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे ओवर ऑल दिस प्लेन, इट विल रिमेन द कांस्टेंट एंड रिमेन्स सेम एट एनी पोजीशन. अगर इस प्लेन को हम कंसिडर करेंगे, इस प्लेन को, दिस ग्राउंड, सो हम इस बॉल की अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं एट एनी पोजीशन, इट विल बी कांस्टेंट. Thus, even if the ball is disturbed, it still remains in equilibrium at practically any position. So ये क्या है, इधर अगर हम पुश कर देंगे तो यहाँ भी बॉल it will be in stable position, right? It will be in equilibrium position.
So this system is called neutral equilibrium. So before going to the example, we will see the how to put it into the mathematical formulation. A potential energy function. So यहाँ क्या है? Potential energies एक function है. Is known for the system. अगर हमें उस बॉल के लिए या किसी भी सिस्टम के लिए अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो मैथमेटिकली द थ्री इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन. सो ये तीनों जो हमने इक्विलिब्रियम अभी स्टडी किए, we can formulate in terms of potential energy function. So we will take one by one. At any equilibrium position, the first derivative of potential energy function is zero. Okay. At any equilibrium position, अगर कोई भी equilibrium position लेंगे तो वहाँ du u क्या है यहाँ? Potential energy. So with respect to x is zero. So वहाँ की derivative हमेशा zero होगी. The sign of second derivative d square u by dx square decides the type of equilibrium. If this thing with respect to second derivative of the potential energy decides the type of equilibrium, whether it is stable, neutral, or stable, unstable, or neutral. So अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, and if it is positive, it comes out positive, then it is stable equilibrium. अगर नेगेटिव आते हैं इसके आंसर, तो हम उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे. अगर इसकी वैल्यू जीरो आती है तो उसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे. So it is very simple formula to calculate the whether system is in stable position or unstable position. Any question? Okay, let's move to the next example. So यहाँ हम देखेंगे a uniform wooden plank. So यहाँ एक wooden plank है, is supported symmetrically by two light cables. So ये T1 और T2 दो cables हैं. Each can sustain a tension up to 500 Newton. So ये जो each cable है वो 500 Newton टेंशन ले सकते हैं. अगर वो 500 न्यूटन से ज्यादा टेंशन रहेगा तो वो टूट जाएंगे. After tying, the cables are exactly vertical है. So what does it mean? So this formula or this problem definition हमें बता रहे हैं कि हमें horizontal forces consider नहीं करने हैं. So exactly vertical, that means we do not have to consider the horizontal forces, and separated by 2 meters. So this tension, two strings are separated by 2 meters. A boy of mass 50 kg. So one boy, mass of 50 kg, standing at the center of plank. So exactly at center he was standing, and he's interested to walking on the plank. So he's interested in the walking in the this plank. How far he can walk? So वो इस सेंट्रल पोजीशन से इस तरफ या इस तरफ कितने दूर जा सकता है? So what is the condition here? That it should not break the strings. So let's calculate. So हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम पोजीशंस के लिए फोर्सेस जो होते हैं, राइट, जो भी फोर्सेस होते हैं वो should be summation of all the forces in x direction should be zero, or summation of y direction should be zero. अगर हम दो डायरेक्शन पकड़ेंगे ऐसे x और y, तो जितने भी y डायरेक्शन के फोर्सेस है वो हम जीरो कर देंगे. ओके, एक्स डायरेक्शन में यहाँ कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप देख सकते हैं. सो हमें सिर्फ ये कंडीशन यूज करनी है अभी. ओके, सो लेट T1 एंड T2. सो इस रूप में जो भी टेंशन है वो T1 और T2 हम लोग कंसिडर करेंगे. बोथ एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड. ओके, ये वर्टिकली अपवर्ड क्यों एक्ट करेंगे? Because we are trying to move this plank downward, so the tension will be in the opposite direction. Cables, okay, weight of the plank is 300 Newton. अभी उन्होंने weight दिया है इस plank का.
ओके, ये प्लैंक का वेट है 300 न्यूटन, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और हमेशा इट इट इज एज्यूम दैट जो भी वेट होता है किसी भी चीज का, इट एक्ट्स थ्रू इट्स सेंट्रल पोजिशन, ज्योमेट्रिक सेंटर। सो यहाँ ज्योमेट्रिक सेंटर क्या है प्लैंक का? इट्स एग्जैक्टली एट 1 मीटर। ओके, 1 meter. So because it's 2 meter totally, so hence this force is acting exactly at 300 exactly at 1 meter. Okay, so ये एक force हो गया। और weight of boy is 500 Newton, is vertically downwards at the point where he is standing। अभी जहां भी है, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, तो टोटल फोर्स क्या होगा? 800 न्यूटन। ओके, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 मिला के क्या होगा? 800 न्यूटन। बट सपोज अभी यहाँ क्या है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि वेयर ही कैन वॉक ऑन आइदर ऑफ साइड। सो लेट्स सी, अगर द बॉय इज एबल टू वॉक x मीटर, ओके, यहाँ से x मीटर वॉक करता है दिस साइड, we will consider first on this side. Okay, so the boy is able to walk x meter towards the right. Obviously the tension in the right side cable goes on increasing. तो इससे क्या होगा? इस केबल में टेंशन बढ़ेगा, राइट, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स दैट केबल। जिस तरह, मतलब अगर ये बॉय यहाँ सेंटर से इस तरफ जा रहा है तो इस केबल में टेंशन बढ़ेगा। अगर बॉय वांट टू गो ऑन opposite direction, this direction, then cable in tension 1 will be more. Okay, sorry, tension in cable 1 will be more. So यहाँ क्या देखना है? अभी हमें कैलकुलेट करना है कि वो either he can walk towards 1 meter or any other distance in between that, right? So we will take moments. तो मोमेंट इज, हमने पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट से हम मोमेंट ले सकते हैं। सो जैसे हमने सिग्मा एफ एक्स देखा, सिग्मा एफ वाई, राइट, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो, वैसे ही another formula is there, summation of all moment should be zero at any point for the equilibrium position. Okay, so अभी हमें क्या करना है इस पॉइंट पे? सो ये मतलब इन वेरी डिटेल, और इसके डिफ्लेक्शन क्या होंगे और इसका मैकेनिक्स कैसे वर्क्स होता है, तो अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे आगे जाके 12th के बाद किसी भी इसमें, तो एक मैकेनिक्स करके सब्जेक्ट आता है, तो उसमें ये आपको वेरी डिटेल्स, आपको सिर्फ ये फोर्स एंड एनालिसिस ही करने होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। सो यहाँ हमने देखा सिग्मा एफ एक्स is 0 for equilibrium position, sigma Fy. What does it mean? Summation of all forces in x and y direction should be 0 for equilibrium position. Similarly, all the moment should be 0. So यहाँ क्या है? हम यहाँ से moment लेंगे मतलब क्या है? हम moment calculate करेंगे। तो इस पोजीशन से अभी देखिए, अभी इस पोजीशन से कौन कौन से फोर्स है? I will clear the thing so that it will be more more evident to you. सो यहाँ से अगर हम मोमेंट लेंगे इस पोजीशन से, तो कौन कौन से फोर्सेस हैं? T1। सो T1 की अगर मोमेंट लेंगे, T1 इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है? 0, राइट। सो पहली मोमेंट T1 इंटू 0 कुछ नहीं होगी, 0। सेकेंड फोर्स क्या है? 300 न्यूटन। सो 300 न्यूटन इंटू 1, दैट इज 1 मोमेंट। ओके, सेकेंड मोमेंट क्या है? अभी यहां से कैलकुलेट कर रहे, तो ये मोमेंट कैसे होगा? इस तरह से, मतलब इट इज वर्किंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें पता है कि मोमेंट ऑलवेज वर्क अराउंड द पॉइंट इन काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज क्लॉकवाइज। सो अभी जो भी है, आपको जो भी सही लगता है वो साइन ले सकते हैं। जैसे अभी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग ने सोचा कि पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। ओके, जो भी है, आपको अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव पकड़ना है तो भी पकड़ सकते हैं। सो इन डिफरेंट बुक्स इट इज डिफरेंटली कंसिडर्ड, बट जो भी है आप फर्म रहिए। अभी देखिए क्लॉकवाइज में हमने मोमेंट लिया 300 इंटू 1। सिमिलरली हमें
इसका डिस्टेंस पता नहीं है, 500 इंटू एक्स, ओके, इज 0, पता नहीं है हमें 500 एक्स, बट इट विल एक्ट एज क्लॉकवाइज, सो वी आर कीपिंग इट पॉजिटिव. अब थर्ड क्या है, टेंशन इन T2. T2 into 2 meter will be negative because it's acting counterclockwise. ओके, सो अभी इनको हम ऐड कर देंगे सारे फोर्सेस को. अभी T2 क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम स्ट्रिंग फोर्स कैन गो एज 500 न्यूटन मैक्सिमम. तो यहाँ T2 क्या होगा, 500 न्यूटन वो मैक्सिमम ले सकते हैं. सो दिस विल कम एज -500 इंटू 2. अगर इनको हम ऐड कर देंगे ऑल मोमेंट्स को, इट शुड बी 0, राइट. सो अगर ऐड करके x डिस्टेंस निकालेंगे तो x विल कम एज 0.4, राइट. अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं. सो हमने क्या किया, 3 मोमेंट ली और उनको समेशन इज इक्वल टू 0 कर दिया. तो हमें सिर्फ क्या अननोन था, x. तो x अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.4 आएगा, राइट. So what does it mean? That boy can travel on either side of that center for 0.4 meter maximum. Okay. So let's see another example. The ladder of negligible mass having a crossbar is resting on a frictionless horizontal floor with angle between its legs to be 40 degree. Okay. So ये एक ladder है रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट. तो ये फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है. फ्रिक्शनलेस क्योंकि हम फिर से यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स कैलकुलेट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है. each 1 meter long, horizontal floor with angle between its legs to be 40 degree. Angles between leg is 40 degree. Calculate the force experienced by crossbar when a person of mass 50 kilogram is standing on the ladder. So यहाँ देखिए ये पर्सन है, ओके, एंड ही स्टैंडिंग ऑन द लैडर. सो इस जो क्रॉस बार या जो भी बार्स हैं उनमें कितना टेंशन होगा ये हमें कैलकुलेट करना है. So again, for any force analysis, you have to consider same rule. Sigma fx is 0, sigma fy is 0, and sigma m is 0, right? So again, we will start with tension T along the crossbar in the horizontal. Let L be the length of each leg. Each is 1 meter. उन्होंने कहा है, जो भी दिया है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे. Okay, so tension T along the crossbar. So this is the crossbar, right? Is horizontal. Let L be the length of each length, which is 1 meter. So ये leg है, उनकी distance है 1 meter. Okay. As there is no friction, there is no horizontal reaction at the floor. So यहाँ हम कोई भी horizontal forces नहीं है. A reaction N given by the floor at the base of ladder will be the only vertical. So यहाँ से ये यहाँ एक ladder का support है और ये एक ladder का. So only these are the forces which will be acted. Okay, there will be, अगर देखा जाए तो यहाँ horizontal force भी होना चाहिए, but उन्होंने कहा है कि this is frictionless support, so there is no reaction offered in horizontal direction. So what is remaining is vertical. So that is N. Okay. So both the sides से N reaction होगा. Thus along the vertical, two such reaction balance mg of the person. So ये जो दो reaction है वो इसको balance करेंगे. So there are only these two forces like 2n, and what is mg. mg is weight of force into g is acceleration. Okay. So हमेशा mass in kg में रहेगा तो उसे force में convert करने के लिए हमें उसे gravitational acceleration से multiply करना होता है. So 2n is nothing but a normal reaction by the floor. So इससे हम क्या calculate कर पाएंगे, n.
250 Newton because mass of the person is given. So N is 250 Newton. At the left leg about the upper end, okay, left leg पे upper end पे, the torque due to N is clockwise. So यहाँ से अगर हम moment लेंगे यहाँ से तो ये clockwise है, right? So यहाँ से अगर हम moment लेना चाहेंगे तो ये कैसी होगी? Clockwise. और ये यहाँ से anti-clockwise, right? About the upper end, the torque due to N is clockwise and that due to tension T is anti-clockwise. और यहाँ tension T के कारण anti-clockwise है, right? For equilibrium, these two torques should have same magnitude. So what we are trying to do here, we are trying to make a moment again. Okay, so only considering this part. Okay, so अगर इस part को consider करेंगे तो क्या होगा? N into L sin 20. Okay, so L is length of each leg, right? So L into sin 20. तो ये 40 degree angle था, तो हम सिर्फ sin 20 ले रहे हैं. So it will give us this moment, because always we have to consider the exact normal distance between the force and the moment place. Okay, तो ये एक हो गया moment, and second moment will be this one. So अगर हम लोग हम इसे पॉजिटिव लेंगे और इसे नेगेटिव लेंगे और इनको equate zero करेंगे, then also it becomes same thing, right? And if you equate this thing, then you can get the value of T, that is around 182 Newton. Okay, if you have any question, you can ask in the chat box. आपको कोई क्वेश्चन है इस लैडर प्रॉब्लम के लिए, आप पूछ सकते हैं. Okay, so we'll try to go to the next thing, that is center of mass. As discussed earlier, Newton's law of motion and many other laws are applicable for point masses only, right? So अभी तक हमने सिर्फ point mass देख रहे थे, but in real life we always come across finite objects of measurable size. तो हमें पता है कि जो objects होते हैं, they do not have some point masses. They have such type of objects, right? Some block. So concept of center of mass. So ये जो concept है, जो center of mass हम लोग अभी पढ़ेंगे, help us in considering these objects to be point objects at a particular location. Thereby allow us to apply Newton's law of motion. So यहाँ क्या है, हम Newton's law of motion apply कर सकते हैं by this using the center of mass principle. Okay, so center of mass, what does it do? So instead of considering this body is made up of small objects, right? So weight is everywhere, it is weight of that body acts towards downward direction, right? But for simplicity and for applying the Newton's law, so we consider, instead of all these forces, we will consider only one force which is acting at the center of the body. So that is called center of mass. So this force is acting through the center of mass. Let's see what is its mathematical formulation. Mathematical understanding of center of mass. System of n particles. So एक कंसिडर कीजिए कि एक सिस्टम है, वहां बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके, कंसिडर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स ऑफ मासेस. सो ईच पार्टिकल का एक मास है, सो देयर आर वेरिइंग पार्टिकल्स एंड ईच हैज मास ऑफ m1 m2 ऐसे mn तक. तो उनका टोटल मास क्या हो जाएगा?
sigma is nothing but summation of all the masses is equal to m, that is total mass. And अगर हम R1 R2 ऐसे वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर्स लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओके, सो यहाँ देख सकते हैं फिगर में, सो यहाँ डिफरेंट मासेस है m m2 mn, तो डिफरेंट मास के डिफरेंट पोजीशन वेक्टर्स है, ओके. So position vector r bar of their center of masses from the same origin is given by, okay. So अगर हम all the mass into their position vectors इनका प्रोडक्ट लेंगे और उनको all प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे and divide by number of all the masses, right? So it gives us the position vector r bar. If the origin itself is the center of mass, then r bar is 0. Okay, so इन सब masses को अगर हम सेंटर ऑफ मास मतलब जो भी ओरिजिन है, ये ओरिजिन से अगर हमने कैलकुलेट किया सब आर आर बार्स जो भी पोजीशन वेक्टर्स है, अगर आर बार 0 है, सो ओरिजिन ओरिजिन है तो center of mass. So what we are trying to say here is, if suppose block is there and there are different masses, different particles we consider, right? But so instead of considering all the masses, we are considering only one force or one mass itself. It's acting to the center of mass. So here the r bar becomes 0 because we are considering that as a origin, and origin plus the center of mass is same here. Okay, so then this position vectors become 0, and the summation of all this becomes 0. Okay, so यहाँ देखना है कि हमें all the जो भी masses, छोटे छोटे masses रहेंगे उनके जगह हम एक ही जगह से उस मास सब समेशन ऑफ मासेस हम एक ही जगह से अप्लाई करेंगे, एक ही पॉइंट से. सो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन. यहाँ देखा कि ओरिजिन ही है जहाँ अगर हमारा सेंटर ऑफ मास है, देन आर बार बिकम्स दिस फॉर्म, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मुलेशन आर बार बिकम्स 0. And then summation of all mi/ri gives the moment of masses about the center of masses. Okay, so it gives moment of mass. So ये mi into ri value जो भी होगी वो what it will give us the value of center moment of masses. Okay, thus center of mass is a point about which the summation of moment of masses in the system is 0. So हमें देखना है, this is a basic definition of center of mass. यहाँ center of mass is a point, ये point है होता है, ठीक है. ये 3 dimensional कोई plane या figure नहीं होगी. This is center of mass is a small point about which the summation of moments of masses, जो summation of moment of masses. So moment ये हमने लिए हैं ऑफ मासेस, जो हम मोमेंट फोर्सेस के लेते थे, तो इसकी जगह हम क्या मोमेंट ले रहे हैं, मास की मोमेंट ले रहे हैं. ओके, मोमेंट ऑफ मासेस मतलब क्या, मास इनटू दैट पोजीशन वेक्टर. ओके, सो उनका जो समेशन है वो हमेशा 0 होता है अराउंड सेंटर ऑफ मास. If x1, x2, xn are the respective x coordinate and r1, r2, rn are the x coordinate of the center of mass is given by. ओके, सो यहाँ हमें x कोऑर्डिनेट अगर कैलकुलेट करना है तो अगेन सेम सिमिलर वे जो हमने किया था, mi/xi instead of ri we are using mi/xi. mi again mi/xi by m is nothing but summation of all the masses. Similarly for y and z direction also it remains same. So ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर सपोज जो हमें पता है, राइट, अगर हम एक ब्लॉक लेंगे, y we are calculating x y z coordinates
and how to. Okay, so यहाँ अगर हम ये x y और z कैलकुलेट करेंगे, z कोऑर्डिनेट्स पकड़ेंगे, मतलब if we are assuming these are the x and y and z and this is the center, right? 0 0 0 and the center is somewhere here, geometric center at exactly this is center of this volume, exactly at the center. So how to calculate that? So we need this x, y, and z direction, z distance, right? So for that purpose, we are calculating through this formula. Okay, so x, y, and z coordinates, we are calculating through that formula by using the this formulation. So we will take some examples. It will be more clear to you all. So continuous mass distribution. So ये तो हमने देखा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. अगर continuous mass distribution है, जैसे हमने देखा था कि एक डोर, ओके, जो भी हमारा वुडन डोर है या स्टील डोर्स है, राइट? अगर ये डोर्स का, इसमें तो ऐसे कुछ पार्टिकल्स नहीं होते, राइट? दिस इज कंटिन्यूअस मास. और एक स्मॉल ब्लॉक which is more made up of steel or any wood. So this is continuous mass. There is no small particles. Though there are very small particles, but we are considering that as a continuous mass. Okay. So for this continuous mass distribution, we are again we are using almost same formula, but we are integrating here, right? Integration is nothing but summation only. Okay, but here we are treating. So when we use summation and when we use integration, so when we can define that as a function, right? So r bar and dm, right? Here we can define this r bar in terms of function, and then we can integrate over the that area or that mass, so whatever the thing we want to integrate, right? So here we can count those particles, hence we are using the summation. So summation and integration are basically same thing. We are integrating means we are calculating the sum of all the stuff. So here we are using the same thing. So if we want to calculate for continuous mass distribution, we are using in terms of integration. So integration of dm is again mass, total mass of the body. Okay, so here also we can calculate the x, y, and z coordinates for the given any figure. Let's see some examples here, so it will be more clear to you all. So system of 2 points of masses. Okay, so यहाँ दो masses है, m1 and m2, और वो in a so system of 2 points of masses. Center of mass divides the distance inverse proportion of the masses. So यहाँ क्या है कि let me see if I can. Okay, so यहाँ m1 और m2 है और x1 और x2 है, right? So in inverse proportion of the masses, so x1 will be dependent on the m2 and x2 will be dependent on the m1. So center of mass will be dependent on the m1 और m2. So यहाँ अगर m1 और m2 दोनों सेम है, तो जो भी ये center of mass है, it will be exactly acting at the d by 2. Okay, and if m2 is more, right? M2 is more, then x1 will be less, and opposite, right? Inverse. So if m1 is less, then x2 will be less. So this way, center of mass acts together. Is it right? So system of 2 points masses, center of mass divides the distance in an inverse proportion of the masses. So
what does it mean? x1 by x2, m1 by m2. Inverse proportion of masses, right? So x1 by x2, so m2 by m1, right? So x1 by x2 will be proportional to m2 by m1. So याद रखिए हमेशा कि x1 by x2 is always inversely proportional to the ratio of their masses m2 by m1. Okay, so अगर m2 by m1 is equal, then x1 by x2 will be equal. But x1 by x2, अगर m2 by m1 is 2, then x1 by x2 is also 2, right? So what does it mean? So x1 will be greater. So this mass will, x1 will shift towards this m2. Okay. Hopefully you got the principle. If you have any question, you can ask here. So simple है, यहाँ अगर m2 बढ़ता है तो ये x1 डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, राइट? x1 इनवर्स प्रोपोर्शन में हमेशा उल्टा देखना है. m2 है तो x1 डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर m1 बढ़ रहा है तो x2 डिस्टेंस बढ़ेगा. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? जो सेंटर ऑफ मास है it will shift towards the larger mass. As simple as that. Okay. Any geometrical symmetric object of uniform density. अगर कोई भी यूनिफॉर्मली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने कहा कि सपोज एक स्क्वायर है. ओके, अगर हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास क्या हो, कहाँ पे होगा? एग्जैक्टली इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर. व्हाट इज मीन बाय ज्योमेट्रिक सेंटर? तो अगर इसको लेंथ जो भी होगी, स्क्वायर की लेंथ इज सेम एवरीवेयर, राइट? सो लेंथ l by 2 and it will be exactly at this position. So from this corner it will be at l by 2, from this corner also it will be at l by 2. Okay, so this way we can calculate the geometric center. So for rectangle, I will take here, for rectangle, so L is the distance, B is the breadth, then the point, this will be at L by 2 here, and the height is breadth by 2. Okay, so this will exactly act from the center of masses. Similarly, they have given the different shapes. You can go through that, and it's very easy. So I will cover some of them. Okay. So this is isosceles triangle. Here we know that these two sides are similar. So here, see the XC is X distance in center of mass. Okay, it's 0. So in X direction, we can see the symmetry. So whenever there is symmetry, we can observe that as a, there is a, like, it will be at the origin. Okay, so here origin is nothing but, so all these things consider from here. Okay, here. So this is the origin. So X is 0 here, YC. So so distance is h by 3. H is distance. Similarly, here also we will take this corner, and from here we can calculate the distance. In for semicircle, again the XC is 0 because we can see in X direction. अगर हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही सिमेट्रिक है, बट वाई डायरेक्शन में ये सिमेट्री नहीं है. तो वाई डायरेक्शन में सेमी सर्कुलर थिन रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस तरफ बढ़ गया है, बिकॉज देयर आर मोर मास ऑन दिस साइड. ओके, अगर ये पूरा सर्कल होता तो वाई सी विल बी द अगेन 0. ओके, एग्जैक्टली अगर perfect circle hota, but now it is a semicircle, so hence there is a difference between the height. तो यहाँ ये different
टाइप ऑफ शेप्स एंड फिगर्स दी है। तो आप यहाँ से जा सकते हैं कि मतलब ये कैसे कैलकुलेट किए हैं। सो एग्जैक्ट कैलकुलेशन मुझे पता नहीं, मतलब इस आपके 11th 12th के सिलेबस में कवर है कि नहीं, बट इफ यू गो टुवर्ड्स more higher mathematics in advanced engineering mathematics, they have proven like why this is 3r by 8 or this why this is r by 2. They have calculated through integration. Okay, so you can consider those formula maybe in advanced engineering concepts, but right now you can take it as these values directly, right, for solid right circular cone or hollow right circular cone. So you have to memorize those values for time being, calculate the center of mass. So let's see another example. Letter E is prepared from uniform cardboard with shape and dimension as shown in the figure. So this letter E is formed using this cardboard. As the locate the center of mass, तो यहाँ हमें center of mass को locate करना है. As the sheet is uniform, each square can be taken equivalent to mass m. So यहाँ क्या करेंगे हम, जैसे पहले कहा था कि हम इसे एक पार्टिकल डिफरेंट पार्टिकल्स में इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये हर एक का मतलब यहाँ देखिए 3 स्क्वायर बना दिए, और ये इस हाइट को भी हमने 5 स्क्वायर में डिवाइड कर दिया, और यहाँ फिर से जो लेंथ है उसे भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सो पूरा ई को हमने टोटली 10 स्क्वायर में डिवाइड कर दिया। ओके, so by symmetry the center of mass m1 m2 and m3 will be at m2 1 by 2. so अगर इन तीनों का अगर हम सेंटर ऑफ मास लेंगे तो यहाँ होगा m2 पे। Okay, similarly effective mass of 3m due to m at m9 will be at m9. so इन तीनों स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास है वो m9 पे एक्ट करेगा। Again, by symmetry, the center of masses of all those three will be they have the coordinate 1 by 0 and 1 by 2. The masses m6 also having the coordinates of 1 0. Thus, the effective mass at 1 by 0 is 7 meter. So, what using the symmetry for m4, m5, m7, there will be effective mass 3m. So यहाँ at origin 0 0 पे ये इन 3 स्क्वायर का उन्होंने लिया है। So thus effective mass effectively 3m and 7m are separated by 1 centimeter along the x direction and y coordinate is not required. Okay, so यहाँ हमें y coordinate is not required. So यहाँ क्या कर रहे हैं, ये p into 0. So 3 masses है, इनको 0 मतलब x 0 0 पे ले रहे हैं, and 7 into 1. So 7 masses into 1 है, और total mass is 7 plus 3. तो total mass is 7 plus 3 is 10. So totally it's become 0.7 centimeter. Alternatively, for 2 point masses, the center of mass divides the distance between them in the inverse direction. So हमने वो देखा है, but what we will do, we will calculate this according to the formula. It will be easier for us. So what they are trying to do here, they are trying to club all these 10 masses and trying to get the symmetry, and from there they are trying to work around the only 2 masses. Okay, so another way is like if you are more interested, what you can do, I will give you another simple way, because they have done it in as expert. But if you want to start, like you can take any point here. Okay, 0 0, any point. Now calculate the each mass and their distance. So from here, if you want to go in the so
If we want to calculate x direction, we have to take all the x, right? As we know. So sigma mi xi divided by total, sorry. So xc is equal to sigma mi xi divided by sigma mi. So जितने भी masses है अभी each mass is of 1, so we do not have to consider 1 for each mass, right? So xi, so यहाँ अगर हम 0 0 लेंगे तो each mass का मतलब एक बॉक्स को हम एक मास पकड़ रहे हैं, राइट? सो इसका एक्स डिस्टेंस, इसका एक्स डिस्टेंस, इसका एक्स डिस्टेंस, इसका एक्स, इसका एक्स, इसका एक्स, इसका, इसका, इसका और इसका। सो ये 10 जो भी है तो उनको हम ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, whatever they have mentioned here. So this is the way it's generally calculated. Similarly for y also, in y direction, all the y distance you have to calculate from the origin. So whatever the origin you consider, from there you have to calculate. So if you consider this as origin or this as origin, it doesn't matter. At last you will get the right answer. But you have to be careful to take the distance from that origin. आपको वो देखना है कि उस origin से हर मास के हर मास के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. इट मे बी इन एक्स डायरेक्शन और इट मे बी इन वाई डायरेक्शन. Similarly, यहाँ देखिए three thin walled uniform hollow spheres of radius 1 centimeter, 2 centimeter, and 3 centimeter are located at their centers are on 3 vertices. So यहाँ हमने 3 circles देखे on equilateral triangle. So ये this is ABC is equilateral triangle. Determine the center of mass of the system. Okay. So mass of thin walled uniform hollow sphere is proportional to the surface area as density is constant, hence proportional to r square. Thus, if mass of sphere A is ma for this is m, then mb is equal to 4m, mc is equal to 9m. So for each mass, we are calculating 9m or 4m on means for each sphere we are calculating the mass. ma is equal to m, mb is equal to 4m, mc is equal to 9m. So by symmetry of the spherical surface, the center of masses are at their respective centers, right? So अगर किसी भी sphere को हम consider करेंगे तो उसका center of mass is always at their geometrical center. So let us choose the origin to be at C. So यहाँ हम origin consider करेंगे where largest mass 9m is located, and thus point B with mass 4m on the positive x-axis and with these coordinates of C, A 0 0, that of B is 10 by 10 comma by 0. Okay, located in the origin at the larger mass here save our efforts of calculations. So if A of mass m is taken in the first quadrant, its coordinates will be the 5 comma 10 by root 3 by 2. So if you know the property of this isosceles triangle, sorry, this triangle, equilateral triangle, here this height becomes 10, that is side into root 3 by 2. Okay, so this is the height. So if we calculate from 0, so this is the for mass for this A, point A, we are calculating the height 10 into root 3 by 2, whereas the x distance is exactly at 5. Okay, because this is equilateral triangle. Hence, for A, this is considered as 5 comma 10 root 3 by 2. So let's calculate xc
we will take mass into XA plus mass B into XB plus mass C into XC and divided by total mass. So we know that for XMA is M into XA is 5. Similarly for XB it is 10. Mass of B is 4m. Mass of C is 9m, but distance is 0 because we are considering that as a origin. So hence XC becomes 45 by 14. Similarly, we have to calculate for YC, where the MA YA plus MB YB plus MC YC divided by MA plus MB plus MC. So here there are two things like YB is 0 and MC is YC is also 0, because in Y direction that's two center of masses coming on the uh, Y axis itself, or Y is 0, right? It's residing on the X axis. So hence this YC becomes YC and YB becomes 0. So center of Y direction, center of mass distance in the Y direction is 10 root 3 divided by 28. So here what we are doing, we are calculating the mass into the distance from the origin, and we are adding those stuff and dividing by total mass. This way we can calculate the center of mass in X direction as well as Y direction. So similarly, example 4.14, whole of radius R is cut from uniform disk radius 2R. So यहाँ ये big mass है जो 2R जिसकी रेडियस है, उसमें से हमने R रेडियस की यूनिफॉर्म डिस्क निकाल दी. Center of the hole is at a distance R. Center of the hole is at distance R. Okay. Locate the center of mass of the remaining part. तो जो भी remaining बचा हुआ portion है उसका हमें center of mass calculate करना है. Using entire disk before the cutting the hole, center of mass of the full disk is at O, right? The center of mass of the cut portion is at the center D. So जो भी हमने cut किया उसका center of mass is at D. Thus, it is at distance x1 is equal to R from the origin. So ये जो distance है in between the this shaded portion O and D is the cut portion. तो उन geometric center का distance है R. Let C be the center of mass of remaining disk. So ये जो भी remaining disk है जो भी कट होने के बाद, तो उसका हम सेंटर ऑफ मास कंसिडर करते कि सी पे है. ओके. Obviously it should be the extension of line DO. So यहाँ ये इस लाइन पे ही होना चाहिए. Let it be the x2 is equal to x. Obviously it should be on the extension of the line DO. Let it be the distance x2. ये distance हम x2 कंसिडर करेंगे is equal to x from the origin. या origin से ये जो distance है वो x है. As the disk is uniform, mass of any of its parts proportional to the area of that part. Okay. Thus, if m is the mass of the cut disk, जो cut disk का mass m है, तो entire disk का mass क्या होगा 4m, and the जो remaining disk है उसका mass क्या होगा 3m. So if we calculate xc, we know the formula m1 into x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. So xc यहाँ क्या है m into r, right? M into r plus 3m into x divided by m plus 3m. So ये क्या है m into r, m1 हमें पता है into r, 3m जो ये है तो वो क्या है 3m into x divided by m plus 3m is total mass. So this distance comes as x is equal to minus r by 3. So ये distance है x is equal to minus r by 3.
So there are like another method where they are using negative mass. Let R be the position vector of center of mass from the uniform disk of mass M. Okay, so ये यहाँ R bar is the position vector of center of mass of uniform disk mass M. जो भी original जो disk थी उसका position vector हम R bar consider करेंगे. Mass M is with center of mass of position vector R bar. ओके जो मास m जो हमने कट की है उसका r बार हम कंसिडर करेंगे. पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क इज गिवन बाय सिमिलरली हम जो भी फॉर्मूला है हम यूज करेंगे बट यहाँ इंस्टेड ऑफ एडिशन वी आर यूजिंग द सब्ट्रैक्शन. ओके because we are removing the mass. So m2 is equal to minus m here. With our description, m is equal to 4m, m is equal to m, small m. So, and r is 0 and r is equal to r. So, by putting these values, we can calculate the RC, which is again the minus r by 3. Okay, so I think we have covered most of the center of mass, how to calculate the center of mass using the formula given. Like we have to add the product of mass into a particular distance and divided by total mass. And we have covered all this stuff. So for today's lecture, for next lecture, we will start from the velocity of center of mass. Okay. So have a great evening. Thank you.